Hello everyone and welcome to the month of learning. यहाँ से थोड़ी देर रुक जाते हैं, लोगों को ज्वाइन कर लेने देते हैं. आप अपने दोस्तों को बता दो, ज्वाइन करने को कह दो. कोई एक बार कमेंट में कंफर्म कर दो लाइक हमारी साउंड ऑडियो वीडियो सही आ रही है कि नहीं. ओके, थैंक यू. तो आइए सब स्टार्ट करते हैं. So hello everyone, welcome to the month of learning. I am Abhishek Bharti, the GDSC lead at NIT Jalandhar. So yeah, basically what is MOL? The month of learning is a thing that is like a traditional thing that we carry on from the past 2-3 years. We host a bunch of workshops and boot camps for the different domains. It is like put together by the GDSC and IT Jalandhar, and it is an exciting journey through the world of technology and innovation. It offers the workshops, talks, interactive sessions where you can dive into the latest techs, learn coding, and explore various technological domains. Like machine learning and web development. Also, you can dive into various other domains like Android or DevOps or game development. Like it is a very good opportunity for you to expand your skills and the knowledge in the fast changing tech field. So some of the primary goals that we want to achieve through this MOL, that also known as the month of learning, are that first of all that we want to help you in your skill development. We also want to help you in your community engagement. Like we have a very big community in our college, and yeah, and most of the developers are good here, and we want them to be engaged. We want them to engage with themselves and like collaborate on different projects. We also want you to like develop projects. That's why we will conduct various workshops and boot camps. We also will provide you like with the industry connections, and like we would hold talks with the industry experts.
And we also want you to collaborate on projects that provide solutions to global problems. So the domains that we will hold during the month of learning are like web, Android, UI UX, ML, game dev, and DevOps. The month of learning timeline looks something like this. Today is the 23rd of December, and we are like, first of all, we will introduce what is MOL, and then we will have a small session on competitive programming. And then on the 26th of December, we will be holding a session on Android study jams. It would continue up till 28th of December. Throughout the Android study jams, you will learn to how to develop an Android app and the basics of Android. Following which we will have a UI UX workshop on the dates of 29th and 30th December. The UI UX workshops give you a deep dive into the world of UI and the user experience that, and you will learn about making a great lot of designs, which would be followed by a web dev workshop. The web dev workshop contains like basics of HTML, CSS, JavaScript, and a touch upon the various frameworks and the various languages that you use in web dev. Yeah, and basically we would be like more focus would be on like it would be a very beginner friendly session. Then it would there would be a DevOps and the cyber security bootcamp. It would be on the Jan 8th to 9th of January. Yeah, DevOps and the cyber security would also be, we will touch upon it with a very basic approach, and then it would be followed by a month of learning. Month of learning month of learning consisting of the machine learning bootcamp and the game dev. In the machine learning bootcamp, like the participants would explore the various algorithms and techniques that are used in the month of learning. And last but not the least, we conclude this month of learning with our hackmall. So hackmall is our flagship hackathon which we organize every year. So next up, what is hackmall? Hackmall is our flagship annual 30-hour hackathon, which is organized by Google Developers Club and IT Jalandhar. That is us. And here we like foster development skills, and we encourage the young coders and developers from all around the country to join together and build projects and solutions that bring a solution to the most of the alarming global problems. It is organized as a conclusion of the month of learning. And as I told you, the month of learning consists of a bunch of series of workshops and seminars that are focused upon the various technologies and the latest technologies that are in this ever-changing landscape of technology and IT sectors. Yeah, so the Hackmore registrations have ever been rising, and this year we are hoping for a much bigger increase. Also, one thing I would like to share is like the Google Solution Challenge is also coming up. So the Google Solution Challenge, the Google Solutions Challenge is a challenge that is a mission to solve one of the like the sustainable development goals that are by set up by the United Nations. The United Nations and Google in collaboration every year organize a competition known as the Google Developer Student Club Solution Challenge. And from many past years, many people have participated in the solution challenge from our college also. Last year I remember one of my seniors participated in the solution challenge. He proposed an app called Hamigo, and last year one of my fellow colleagues, known namely Adi Garg and Pratik Goyal, participated in this.
and they also came in the top 100. It is a very good competition to showcase your skills, and also it allows you to focus on a very on solving a real world life problem. So the timeline of solution challenge would look something like this. The solution challenge registrations opens on December 1st, and the registrations are currently going on, so you can register on this. And the kickoff event would be on January 11th, and the submissions would open on the January 1st, 21st of January. So this is the learning and the building phase of the solution challenge. Upon that, the solution challenge, the submissions close on 22nd of this February, and here you will be required to submit your solution and a video that explains your solution. After that, you will have to be submit the the top 100 teams will be announced in the early April. After that, the mentorship phase begins. The selected top 100 teams would be given a mentor and would be assigned a mentor, and they would work under his mentorship and improve the proposed solutions. After that, on the final submission would occur on the May 25th, May 5th, and the final top 10 on the final top 10 would be released in the late May. After that, the demo day and the projects would be showcased, and the top three would be announced. So the sum of the prizes that would be handed over as this conclusion of the solution challenge would be the top three clubs with most solution challenge project submissions would be rewarded, and the top 100 teams would be rewarded, and they would be given a branded t-shirt and a certificate. The final 100 teams that make it to the top 10 of the solution challenge submissions would be given an additional mentorship, and would also be given $1,000 prize per person. And the finalists that reach the top three would be given a total of 3,000 per member. $3,000 per member. This is the sum of the submission criteria. The submission criteria would be is first of all, you would have to set up a project, then you implement it, then you test it, then you successfully complete and submit your solution. After that, you scale your solution. So firstly, focus on the project problem statement, then you project setup, you choose a bunch of technologies that you want to focus on, and rest. After that, you will implement your project. After the implementation is done, you would like to test it on the real life customers and want them to have a feedback. And if you want to improve your product, you can improve during this period. And after you have considerably improved your product, and you have gone through a lot more iterations, you can go on and submit your project. And after submission, if your project has been selected, or you are in the top 100, then the thing comes to a minor improvements and scalability. So these are the judging criterias. The impact, like what is the impact that the project is for applying on the world, and what is the problem statement that you are choosing that looks to solve a very real life problem, and which is like the and then you would then 25 points would be placed on technology. Does the team clearly describe what the following architecture, like what is your architecture, then what are the components you are using, what are the specific technologies you're using, and how are you implementing it, and stuff like that. A good problem statement. So the tricks to create a good problem statements would be you should present the urgency and the significance of the problem, and you have to structure your problem statement in such a way who is experiencing the problem, what is the problem, where and when is the problem occurring, and why it is a problem. So some of the resources would be these are the links shared
and you will get this PPT. So don't worry about the links. So yeah, thank you for joining in. And now I would like to ask Jitender to come up. Thank you, Abhishek. Now it's the time for. Okay. Now we will be starting the CP session, and the speakers are Manpreet and Saurabh Sahu. And here we will be only giving brief introduction as competitive programming is more about practicing. Here we will tell you how to approach a problem and how can how you can find a perfect solution in a less time, as we know that in competitive programming the thing that matters the most is the time complexity and space complexity, and we have to find a solution that has less time complexity. Okay, now we'll be starting the session, and I would like to ask Saurabh to start the session. Saurabh. Yes, sir. Am I audible? Yes. Okay. ओके तो आज का हमारा सेशन आज का सेशन है इंट्रोडक्शन टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो आज के सेशन में हम इन सबको कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, and what's the format of competitive programming problems, and how to be a competitive programmer, and हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन से टॉपिक्स सीखने होते हैं, एंड एक सैम्पल प्रॉब्लम है लास्ट में. सो फर्स्ट इज व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का सबसे बेसिक मीनिंग होता है एक किसी भी फिक्स टाइम के अंदर प्रॉब्लम्स को सोल्व करना. हमें कुछ फिक्स टाइम दिया होता है एंड कुछ प्रॉब्लम्स गिवन होती है, उस फिक्स टाइम के अंदर ही हमें उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है. अब प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें दो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. पहली है लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, एंड सेकंड इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सबसे पहले हमें लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए. अगर हम कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर उसका लॉजिक फाइंड कर लेते हैं तो हम उसको ईजिली उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. एक बार लॉजिक हमने फाइंड कर लिया, देन हमें कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी से आनी चाहिए, जैसे जावा, सी प्लस प्लस या सी हो गई या पाइथन हो गई. देन हम उस प्रॉब्लम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एंड लॉजिक का यूज करके उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं. तो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले दो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक है लॉजिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एंड सेकेंड इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मेन फोकस किसी सॉफ्टवेयर डेवलप करना नहीं होता, जैसे वेब डेवलप करना या ऐप डेवलप करना. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का बेसिक फोकस होता है, मेन फोकस होता है प्रॉब्लम्स को सोल्व करना. इसके अंदर हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होते हैं एक ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन फाइंड करके. देन प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम बहुत से प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कोड शेफ है, हैकर रैंक है, हैकर अर्थ या लीड कोड या जीएफजी का यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं. यहाँ पे कॉन्टेस्ट देकर भी हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं. तो ये ब्रीफ आइडिया था हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के ऊपर कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम क्या होती है और हमें किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. So next is the difference between competitive programming and real world programming. रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में हम सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहे होते हैं, जैसे वेबसाइट डेवलप करना या ऐप डेवलप करना. लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम ओनली प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे होते हैं. कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन उनका लिखना होता है. एंड रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में हम यूज़र इंटरफेस या डेटाबेस यूज़र्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल कर रहे होते हैं. एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम अपने प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर करते हुए अपने प्रोग्राम्स लिख रहे होते हैं, जैसे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये सब कम से कम होनी चाहिए. एंड रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के लिए हमें कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो गई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गई, ये सब स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं एंड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं
जिनकी हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये डिफरेंस था अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एंड रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। नाउ नेक्स्ट है कि हमें क्यों कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट रीजन है गुड प्रैक्टिस। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हम अपनी प्रॉब्लम्स को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूज करने से उसकी हमें प्रैक्टिस अच्छी होती है, इससे हमारे अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स और बेटर होती है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से हमारे अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप होती है एंड यहाँ पे एक डिलिबरेट प्रैक्टिस यूज में आया है। तो डिलिबरेट प्रैक्टिस होता क्या है? डिलिबरेट प्रैक्टिस में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स स्किल्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, देन हर एक पार्ट को मास्टर करते चलते हैं, हर एक पार्ट को सीखते चलते हैं और हर एक पार्ट की कुछ स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, जैसे इट शुड बी रिपीटेटिव, शॉर्ट इनफ टू बी इजीली रिपीटेबल। वह इतना शॉर्ट होना चाहिए कि उसको हम इजीली रिपीट कर सकें। सेकंड इज टारगेटेड, सिंपल इनफ टू इट कैन बी मास्टर्ड इन अ फ्यू सेशन, जिसको इतना सिंपल पार्ट होना चाहिए जिसको हम इजीली सीख सके। अगर वो कॉम्प्लेक्स पार्ट को सीखने के लिए हमने उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। देन इट शुड बी इंक्रीमेंटल, देन इमीडिएट फीडबैक। इन सब चार स्पेसिफिकेशंस उसमें होनी चाहिए हर एक पार्ट में। देन हमें हर एक पार्ट को मास्टर करके उस कॉम्प्लेक्स स्किल्स को इजीली सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव वेज टू प्रैक्टिस। हम किन किन टाइप से अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बनाकर भी अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में हम कंट्रीब्यूट करके भी अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकते हैं, प्रैक्टिस को और बेटर कर सकते हैं। नाउ सेकेंड रीजन इट टेस्ट एसेंशियल स्किल्स। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेसिकली हमारी बेसिक जो फाउंडेशन होता है या बेसिक जो स्किल्स होती है प्रोग्रामिंग को, उसको टेस्ट करती है। अगर हमारी बेसिक जो स्किल्स है अगर वही अच्छी नहीं होगी तो हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छे से नहीं कर सकते। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से हमारा बेसिक जो स्किल्स होती है और बेसिक जो फाउंडेशन होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो डेवलप होता है। एंड जो प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट जो होते हैं उनमें हम प्रोग्राम जो कॉन्टेस्ट होते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जो हिडन केसेस होते हैं उस पर हमारा प्रोग्राम रन करता है। हमें लगता है कि हम जब कोड लिखते हैं कि पूरा प्रोग्राम सही है, बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा पूरी तरीके से नहीं होता है। तो जब हम कॉन्टेस्ट सॉल्व करते हैं तो उससे हमारी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है वो और अच्छे से टेस्ट होती है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इनहेंस करने के लिए। नाउ थर्ड रीजन इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। अब जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती है हमारे आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये तीन स्किल्स मेनली डेवलप करती है। फर्स्ट इज लर्निंग न्यू थिंग्स क्विकली। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने के बाद हम जो न्यू टेक्नोलॉजीज होती है जैसे वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट, किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को हम इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वजह से हमारे अंदर लॉजिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग अच्छे से डेवलप हो जाती है। एंड थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से हम इजीली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मेनली तीन स्किल्स डेवलप करता है: लर्निंग न्यू थिंग्स क्विकली, सेकेंड इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ नेक्स्ट रीजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड। कुछ इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट होते हैं जैसे आईसीपीसी एंड कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो भी अपने कॉन्टेस्ट कराते थे हर वीकली या बाई वीकली। तो इनमें अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को शो करके हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हाँ हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी है। एंड इन सब कॉन्टेस्ट के लिए या जो इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट है आईसीपीसी, उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की सबसे ज़्यादा नीड होती है। अगर हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी होगी तो हम इजीली उनमें बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हमारे इंटरनेशनल अपनी स्किल्स को शो करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज इट पेज। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हमारे जॉब के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है न्यू जो फ्रेशर्स आते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती है वो अगर उनमें नहीं होती तो उनमें बहुत ज़्यादा स्पेंड करना होता है। बट जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स ऑलरेडी बेटर होती है, तो जो कंपनीज होती है वो उनको ज़्यादा प्रीफर करती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स को हायर करने के लिए।
तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स को एक एज मिलता है अपनी प्लेसमेंट या जॉब के टाइम, तो वो हमारे प्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। एंड सेकेंड इज इट्स फन। अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मजा आता है या इंजॉय करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक बेस्ट फील्ड है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और इनहेंस करने के लिए। तो ये तो कुछ रीजन थे हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को करने के। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट्स द फॉर्मेट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होता है, जिसमें पूरा एक्सप्लेन होता है कि इस प्रॉब्लम में हमें करना क्या है। देन रन टाइम लिमिट गिवन होती है, एक पर्टिकुलर रन टाइम होता है, इसी उसी टाइम के अंदर हमें प्रोग्राम को रन करना रहता है। देन थर्ड इज इनपुट फॉर्मेट। हमें एक कुछ रेंज दी होती है इनपुट की, इसी रेंज के अंदर हमारे सभी इनपुट्स वेरी करते हैं। देन फोर्थ इज आउटपुट फॉर्मेट। हमारा आउटपुट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, अगर वो उस फॉर्मेट के अंदर नहीं होगा तो हमारा आंसर रॉन्ग ही होगा। एंड द नेक्स्ट इज सैम्पल इनपुट। हमें कुछ एग्जाम्पल टेस्ट केस दिए होते हैं, जिसकी ये सब सैम्पल इनपुट ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सैम्पल इनपुट के बेसिस पर हम पूरी प्रॉब्लम्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कुछ इनपुट दिए होते हैं, देन उनके आउटपुट दिए होते हैं, जिनसे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट होगा एंड कैसे वो आउटपुट आ रहा है। देन नेक्स्ट इज हाउ द प्रोग्राम इज सेट। अब हमने प्रोग्राम भी लिख लिया, अब देन उसको रन करने का टाइम है। तो कौन कौन से एरर हमें शो हो सकते हैं जब हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं। तो द फर्स्ट एरर इज कंपाइलेशन एरर। किसी प्रोग्राम को रन करने से पहले सबसे पहले चेक होता है कंपाइलेशन चेक होता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, या फिर कहीं सेमीकोलन लगाना भूल गए हो, या किसी भी प्रकार का अगर सिंटेक्स एरर अगर प्रोग्राम में होगा तो हमें कंपाइलेशन एरर शो होगा। तो कंपाइलेशन एरर हमारे सिंटेक्स एरर की वजह से होता है। देन नेक्स्ट इज रन टाइम एरर। अब प्रोग्राम रन करने के बाद हमारे अगर प्रोग्राम में कहीं लॉजिकल एरर होता है, या कहीं इनफाइनाइट लूप चल रहा है, कहीं भी हमारे प्रोग्राम में इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाता है, तो उस समय में रन टाइम एरर शो होता है। देन टाइम लिमिट एक्सीड। अगर हमारा प्रोग्राम जो गिवन टाइम है उसको एक्सीड कर रहा है, तो हमें टाइम लिमिट एक्सीड एरर शो होता है। देन नेक्स्ट इज रॉन्ग आंसर। अगर हमारा जो आउटपुट जो प्रोग्राम में आउटपुट दे रहा है, अगर वो गिवन एक्सपेक्टेड आउटपुट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें रॉन्ग आंसर शो होगा। देन प्रेजेंटेशन एरर। अगर हमारा आउटपुट भी सही है बट उसका प्रेजेंटेशन जो है वो जो डिफरेंट है, तो हमें प्रेजेंटेशन एरर शो होगा। देन अगर ये सब एरर अगर क्लियर हो जाते हैं तो ही हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन करता है। अगर इनमें से एक भी एरर होता है तो एक भी एरर शो होता है तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं करेगा। देन नेक्स्ट इज कॉमन बिगिनर एरर्स। जो हम जब स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम प्रोग्रामिंग के टाइम करते हैं। देन लेफ्ट साइड में एक प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें आंसर्स एक एरे है एंड इंस्टेंस एक एरे है। सबसे पहले आई एक वेरिएबल है जिसमें लूप क्रिएट हुआ है जो n केसेस के लिए चल रहा है। इसमें हम इंस्टेंस एरे में यूजर से इनपुट लेते हैं, देन उसको n टाइम्स इनपुट लेते आते हैं इंस्टेंस एरे के अंदर। देन सेकेंड टाइम अगेन हम लूप क्रिएट करते हैं, लूप रन करते हैं, जिसमें आंसर्स के अंदर उस इंस्टेंस की वैल्यू को सोल्व करके स्टोर करते जाते हैं। देन अगेन थर्ड लूप क्रिएट करते हैं, रन करते हैं, जिसमें आंसर्स की जो वैल्यू होती है उसको प्रिंट कराते जाते हैं। तो इसमें हम 3 लूप क्रिएट करते हैं। लेकिन जो राइट साइड वाला प्रोग्राम है उसमें हम इंस्टेंस के अंदर इनपुट लेते हैं, देन आंसर के अंदर जो इंस्टेंस की वैल्यू उसको सोल्व करके आंसर के अंदर स्टोर करते हैं, देन उस आंसर को प्रिंट कर देते हैं। तो जो लेफ्ट साइड का जो प्रोग्राम है उसमें हम 3 बार लूप रन कर रहे हैं, बट जो राइट साइड का प्रोग्राम है उसमें हम एक ही बार लूप करके पूरे प्रोग्राम को सोल्व कर रहे हैं। तो ये ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होगा इसका लेफ्ट साइड वाले प्रोग्राम की कंपैरिजन में। तो हमें कम से कम रिसोर्सेज एंड कम से कम वेरिएबल का यूज करके ही अपने प्रोग्राम को रन करना होता है। देन नोट डूइंग एनालिसिस। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद हमें उसका एनालिसिस करना चाहिए। जैसे ड्राई रन हो गया, ड्राई रन सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी प्रोग्राम में एरर फाइंड करने का। अगर हमारे प्रोग्राम में कहीं भी एरर होगा तो हम ड्राई रन के थ्रू इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम में एरर किस जगह आ रहा है, या फिर किस इनपुट के लिए हमारा आउटपुट रॉन्ग आ रहा है। तो किसी प्रोग्राम को रन करने से पहले हमें सबसे पहले उसका ड्राई रन करना चाहिए। अगर एक बार ड्राई रन सही से चल रहा है तो ही हमें अपने प्रोग्राम को रन करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू बी अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर। अब हमने ये तो देख लिया कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी क्यों चाहिए एंड किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स हमें गिवन होती है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू बी अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए अब मैं मनप्रीत को बुलाना चाहता हूँ। मनप्रीत।
Hello, is my I am I audible? Hello. Yes. Okay, so now we'll discuss good competitive programmer. So, Saurabh, can you please the next slide? So, first step is getting comfortable with the programming language. So, first of all, you need to choose a particular programming language. It could be anything, C++, Java, Python, but preferably it would be Java, or C++. Uh, so to get comfortable with the programming language means nothing but to understand the syntax. How do we write? How do you take input from the user? How do you display output? How to write for loop, while loop in a particular language. So that's it. Getting comfortable with the programming language. You could practice it with the help of online judges, such as the next slide, please. Such as URI Online Judge. It has replaced of the contest from past ICPC. ICPC is an international coding contest. We will discuss it at the end of the session that how do we participate. But URI Online Judge is an online judge which helps you to understand a particular language. Basically, you understand its syntax, that how a language works and how do you write for loop and while loop. So it has a good collection of problems for a beginner, and it has a user friendly interface. So the next one is next slide. The next one is UAV Online Judge and U-Hunt. It's an old, but still it has a wide archive of ICPC's problem, which is very helpful when someone is getting started. It's old and buggy, but still it has got biggest problem archives. The next one is Code Forces. Now, this is by far the most used and most popular one among these all, and it has new coding contests and problem every week that helps you understand the language much faster. You can also read other people's submitted code and analyze your code. That way, you are getting wrong and improve yourself. The next is Hacker Rank. HackerRank is also one of the popular platforms where you can learn a coding language or get started with it. It holds regular contests and some pricing tutorials. It has coding challenges organized by topics from easiest to hardest, which is, I guess, very important when you're getting started. It even includes practical topics not found in most programming contests, and challenges have editorials. Now, editorial is it's a simplified answer. So the next one is Project Euler. It has more or less math-oriented problems. If you are well, more like a maths kind of guy, you can check this out too. The next is A2 Online Judge. It's also an online judge which helps you with practicing with the programming language. So after this, the next slide, please. Uh, after you are done and you're comfortable with a particular programming language, you need to learn some standard tools. For example, what are data structures, and that's it. Get a book or online uh, get a book, or you can take an online course. For example, this is a book by Kellenberg, and these are MIT courses. You will get the link of these courses at the end of the session, and after that you can get free courses on Coursera also, like from the Princeton University and from Stanford. These are very helpful when you are getting started on data structures. So these are list of topics. We will discuss it later in the session. After this is uh, Saurabh, can you please do the next slide? After you are finished with all those, the last and the most important thing that comes in CP is practice. And without practice,
you can't be a good CP cooperative programmer. So for practice also, there are some steps that you need to follow. You need to solve problems regularly. Without solving regularly, you can't expect yourself to be a good competitive programmer, because with practice only you get to know how do you tackle questions, and how do you do it in a particular time frame, and that's it. First you need to try and solve the problem. If you are stuck, you need to read the editorial. Editorial is, as I told earlier, is a simplified explanation for the question that's given. Then you need to restudy and restudy any unfamiliarized data structure or algorithm mentioned in the editorial. So after you read, you can see the tags also in a question. They are tagged with some type of data structures such as tag, keyword, arrays. And if you haven't read those, it's recommended that you first read them and then try to solve the question. Then you resolve it. And if you are stuck again, don't copy other people's code. Try to read other people's code and understand how the other is approaching the problem, then try to resolve it. And the most important thing in CP is that some people do is they just devise an algorithm, such as they get a question, they devise an algorithm in their mind but never code it. For that, you to be a good competitive programmer, you need to code it. No matter you know the solution or not, you need to code it, then only you will be good. Repeat the same type of problem until the speed improves, and repeat until mastery of wide types of problem. So one problem can be formed in many number of ways, and you don't need to try to learn the code, but rather understand how you approach a problem. And the next is, you can join online contests such as ACM and ICPM. So I told you ICPM is an international collegiate programming competition, which is an international competition held between universities. So it's a good international contest that everyone should participate. Its registration in India usually starts in August, and the regionals are held in December. And the winner of the world final gets an handsome prize of $15,000. Uh, so yeah, you should participate in these contests. The other contest is Google Kickstart. It's a contest which is organized by Google itself only. It consists of online three coding rounds. The winner gets cash prize, and the participant may also be invited to the interview at Google. The other such is Google Code Jam. It's more or less similar as Google Kickstart only. So these are the topics that you need to learn before trying to solve any problem, such as the basics. What is an array, how to iterate an array, and how to add an element to an array, how to delete it, a programming style, understanding specification. And understanding specification also include the time and space complexities. The time complexity is nothing but the time required for the code to run, in simple terms we can say. And the space complexity is how much space it requires while running. So time complexity is usually denoted by big O of n. What it means big O? Big O is, you consider a case when the program has worst case, such as you want to find an element in an array. So the best case would be you enter an array, the first element you get is the answer. But the worst case is you have to traverse the whole array once, and if the last element matches it or not even match it. So you need to traverse the whole array, which is directly proportional to the size of the array. So that's the time complexity. So that's how we denote big O of n. Big O of something that's proportional, that size of the array, like big O of n, big O of n square, big O of n log n, or log n, that goes on. So data structure problems you need to solve. You need to know about the basic data structures such as array, strings, linked list, stacks, queues, different type of queues such as circular queue,
linked list, doubly linked list, NQ, DQ. So you need to be familiar with those type of things. String, library functions, sorting is nothing, just rearranging uh, rearranging a particular set of number or characters, anything it could be. Arithmetic and algebra, you need to know the basics of arithmetic problems also. uh, recur- Recurrence problem, number theory problem, divisibility and modular arithmetics. It's very important to know divisibility and modular arithmetics because it comes handy when you do many of the questions. Backtracking problem, constructing subsets and permutation, graph traversal problem, DSF and BSF, these are later on stages. But after you're done with these all, you could go for graphs, trees, and dynamic programming. Uh, the next page is uh, it also contains same such as discrete data structure, mathematics, divide and conquer, data structures and sorting, dynamic programming, combinational games such as there are many questions they will ask you in how many number of ways this could be distributed, or there are, let's say, n chocolates, how can this be distributed among k childrens, what are different kind of ways, and that's such. Spanning trees, shortest path trees, these are trees, backtracking, branch, and round. So example question, let's take up an example. uh, if an unsorted array is given of size n and the elements are in the range of 1 to n, one number from the set of 1 to n is missing and one number is occurring twice. So as you can see in the example, second example, let's say 4 3 6 2 1 1. Now this is given in an unsorted manner, means these are not arranged like ascending order, descending order, these are just randomly given. But you could see that the size of the array is 6, uh, and the numbers we are given is between 1 to 6, and here we could see that the missing number is 5 and the repeating is 1. So when we try to think of this problem, how do we solve it? So the first approach that comes to our mind is using sorting. That's the basic approach, that you will arrange everything orderly and just traverse and see where the element is repeating and where it's missing. uh, but now here comes the catch. When you see the time complexity, the sorting algorithm which you will use to sort the array will have the least time complexity of n log n. Now n log n time complexity is okay, but can this be optimized further? Then we try to devise another approach for this problem. The another approach could be, we could use some space also. For example, we could make a new array index from 0 to n minus 1. And what would we do with this array? We would traverse the first array that was given, 4 2 6 1 1 3 1 1, and we would be counting the number of times each is present and store it in the new array which we have created. So what it does would be, we will then traverse the second array which has the frequency of the numbers, the new array which we have created, which is having the frequency of the numbers. We would traverse it and see which element is having the frequency of 2, that's repeating twice, and which element has the frequency 0, means that's the missing number. But we will think more that how, well, is there any other way that we could optimize it any further? We see that time complexity is, means it's O of n, and if we try to go lower, we can't go. So we'll try to reduce the space. So till now, what we have done is we created another array and were marking the frequency of the number in the new array. Now, in third approach, what we would do is we would make changes in the same array. We would traverse the array. When we would reach a particular point, we would
take the array and marks it index with a negative number. This indicates that the particular index has been visited. So uh, the code of this will be here. So what here it is doing, as you could see in the input 436211. So what we will do is we first traverse the array, and for example we land on the first index. We get 4. So the element which is on the fourth position, like 4362, 2 is on the fourth position, we will mark 2 negative. This means the element or the fourth index we have marked, we have visited that place. Next we will do same for the 3. We would see that 6 is on 3, we would mark 6 as negative. And then for 6 we will mark -1. Then for 2 we will mark -3, and 1 we will mark -4. Now again when we will reach the last element 1 and we are going to mark 4, we would see something strange, that 4 is already marked or 4 is already negative. This means this index, the 4, the element 4, it is on whichever index, that's 1, that it's been visited once. So we will know that it's visited. So uh, that's visited. And as you could see, this second last one, it's not being marked negative. This means that this hasn't been visited, so this will be a missing element. So this is the most optimized approach which you could go to solve this type of problem. So this type of approach usually comes when you practice a lot and a lot, and without practice nothing will happen. And the next thing is, CP contest will be held on 7th January 2024, and you are all requested to be present and take part in the contest. It would be a fun contest, and there would be many rewards such as goodies from NITJ. The next thing is, thank you for all of you for joining this session. And if you are having any queries, let us know. And all the links and resources will be shared to you after the session. If you are having any query, please post it on. Okay, someone is asking to explain the previous question again. Saurabh, can you please? So in this, uh, are you able to understand the last method, or from the starting I need to explain? Okay, I'll explain the last method once again. So in last method, so first we will know what we were doing in the second method. So in the second method, what we were doing is basically, uh, we created a new array so we could track the frequency of how many times a number has been visited. We would try to do same, or we could try to do some modifications in the same array itself, so we could know that how many times we have visited that number or index. So the last method that I discussed was, what we do is, मतलब जैसे पहला ले लिया एलिमेंट, we would take the we would go and iterate the array, and first we would go on the first index, we would see 4. So we will try and jump to the fourth index and mark it negative. It means that we have visited the fourth index, or in array terms, we could say the third index we have visited. So why we are doing this
approach for this question specifically is because you could see that every number is present only once, but one number is coming twice and one is not coming at all. So it's more appropriate to do it with marking the numbers negative or marking the that index value negative. For example, when we see 4, first we will traverse the array one by one. So first on we would get on with 4. We would see the fourth index. Fourth element in the array is index 3. Index 3 means 4, 3, 6, 2. 2 is the fourth element in the array. We would mark it negative. Okay. Now we would do same for the 3. Now when we traverse it second, but on the second iteration 3, we would see the third, which is the third element. 4, 3, 6. 6 is the third element in the array. We would mark it negative. But while marking it negative, also we need to uh, check the sign that whether it's been marked negative or not. Uh, so after that, we would take keep on iterating the array. We will reach 6. So this would be basically -6, but we are taking mod everywhere so that we will be knowing the actual value present at the index. Understood? At the while traversing, what we do is we take mod of the elements. Someone is asking what does marking negative means. Marking negative means is like the value 4, 3, 6, 2, 1, 1 are present. We would mark these value negative. For example, when we go on 4, when we traverse the array such as 4, 3, 6, for the 4 we will take the fourth term, that's 2, and mark it negative, such as we would again get a new array 4, 3, 6, -2, 1 and 1. This would let us know that the this index, that -2 is present on which index, that's third index or fourth element of the array. On marking 2 -2, we would know that this index is already traversed, or you have already traveled to this index. Now for the third one, similarly for third, when we do, again we get a new array 4, 3, -6, -2, 1 and 1. Now when you get on the third one, that's -6, you would be taking modulus such as uh, the function maths.abs, which gives you the absolute value, or basically you could say that it is a mod operation that we use in mathematics. So we are doing this marking negative only because it preserves the value of the array, such as we know what value was present in the index, and the plus minus sign on the number indicates that whether it's been visited or not. So kind of like we are storing two information in a single array index. Okay, if you have got it, so this is the code. You could read it out. It's nothing but just I said. Okay, so is anyone having any other doubts? So remember that the CP contest is on 7, and join it. It would be amazing. There would be many rewards such as goodies given to you from NITJ. Do join it, and thank you for today's session.